Welcome to the Utkarsh Parashar Show, Indian Student Life in Canada Foot True Indian Akshit. This podcast is sponsored by Fintech Valuation Advisory LLP. Fintech is a leading valuation firm for all kind of assets. So hello and welcome to the Utkarsh Parashar Show. Today we have a very special guest, a man, a personality who generally does not need any introduction at all. He is well known among all the international students and professionals. He is very popular YouTuber with more than 179k subscribers. So he is none other than our true Indian Akshit. So thank you so much, Akshit sir, for accepting my invitation and coming up on the show. It's a huge honor for me to interact with you today. Thank you so much, Utkarsh, for having me on the show. I'd love to explore my own journey with you. So I thought let's get on to the podcast, and thank you so much for that wonderful introduction. So yeah, let's get started. I am so excited. Okay, so let's begin by asking about your Canada journey. So कैसा था आपका overall experience? आप 12th के बाद कैसे गए थे? So please तो बताएं. तो उत्कर्ष की मतलब मैंने 12th के बाद मेरे पास काफी ऑप्शंस थे. तो 12th तो चलो ठीक है, बट 12th के पहले काफी ऑप्शंस थे. जब मैं 10th में मतलब 10th 11th में आया था, तो 11th में मेरे को था कि जेई की जैसे हर एक का इंडियन का मतलब मोस्टली होता है कि जेई प्रिपरेशन जेई करके हम आगे एनआईटी या आईआईटी जो भी जैसा भी होगा करके देन देखेंगे कि कैसे अच्छी सी जॉब ले लेंगे या. बट देन के बाद क्या हुआ यार, उसके बाद ना मैं एक्चुअली मेरे से थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था 12th में. तो मेरे 4-5 महीने बर्बाद चले गए. तो मैंने कहा यार अब यहाँ तो मैं ड्रॉप ले लूँ और यहाँ तो मेरे को अपना प्लान ड्रॉप करके जेई वाला बाहर का सोचना पड़ेगा. तो मैंने घर वालों से बात की. घर वाले बोलते जैसे देखो ठीक लगता है वैसे तू कर ले. सो देन आई मतलब थॉट कि आई विल गो फॉर कनाडा. ठीक है, तो मैंने कनाडा देखी सारी कैसा है कैसा नहीं है. अब्रॉड की एजुकेशन जो है वो काफी कॉस्टली होती है, राइट. तो उस हिसाब से फंड वगैरह मैनेज करके देन आई समहाउ मतलब अप्लाइड टू आई थिंक 4-5 कॉलेजेस. उस टाइम पे सैनिका, हम्बर, जॉर्ज ब्राउन, ये सारे कॉलेजेस जो मतलब अच्छे जहाँ सुना हुआ था कि हाँ भाई अच्छे कॉलेजेस हैं. नेट पे उनकी रैंकिंग देखी थी. देन आई अप्लाइड फॉर सैनिका. और ये डाउट था कि मेरे को ये डाउट था कि मैं किस चीज़ में अप्लाई करूँ. तो मेरे पास जो 12th और उसके बाद जो समय था 12th और मतलब इधर आने के पहले का समय था, तो उसमें 3-4 महीने में मैंने कोडिंग भी ट्राई कर ली. तो मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, जिसको नहीं पता, तो आई स्टार्टेड कोडिंग. मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आया. फिर मैंने वेब डेवलपमेंट ट्राई की, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया, राइट. तो देन आई स्टार्टेड डूइंग नेटवर्किंग. ठीक है ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग. तो कंप्यूटर नेटवर्किंग अच्छी लगी, लाइक इट वाज बेटर देन ऑल. तो मैंने कहा लेट्स गो विद दैट. तो फिर मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स चूज किया था सैनिका कॉलेज में. एंड देन आई केम हियर, लिव लाइक आई थिंक इन 2018 दिसंबर में मैं यहाँ पे लैंड हुआ था. बस फिर उसके बाद तो मतलब ये था कि 12th के बाद जब एक बार सोच लिया कि जाना है बाहर, तो देन फिर मैंने कुछ सेकंड थॉट्स नहीं रखे. सीधे फिर मैंने कनाडा के लिए पूरा स्ट्रेट थॉट्स रख लिए कि उधर ही जाना है. एंड देन आई जस्ट केम हियर. या ओके, इट्स इम्प्रेसिव. It's very impressive. So what do you think differentiates Canada apart from India in terms of education? Okay, so Utkarsh, देखो मैंने I haven't studied in India in colleges, right? But as per my experiences, like मेरे friends ने जो मुझे बताया कि it's very different. In sense, let me explain you. So in India, what happens is you will be based, your marks will be based on the final score that you'll get, right? But here it's not. So what you will do, you will have to prove yourself every now and then through the tests, labs, assessments, that you are doing good in the class. If you have like got 50% or less in any of the tests, let's say you got 4 tests or 5 tests throughout the year, including labs, assessments, your assignments, and your final exam, right? So anyway, right. If you get less than 50%, your whole course will be dropped out. It means that you will get a D, not a D, actually F, and you have to take that course again. Okay. So you have to study the whole semester and get 50% or above in all the tests. So by doing so, what happens is that you get the knowledge of the subject. It's not like last ke 3-4 dinon mein pad lenge and then I'll be fine with that. But what will happen is that you will study throughout. You will take participation in the labs, in assignments, and you will have a group projects in all the semesters. So you will take participation in that, and by doing so, you will increase your knowledge and you will get lot of skills that you, even if you don't want to, but you have to, because that's how you will pass. And if you fail, what will happen is you have to pay approximately $2,000 for one subject. Okay. So let's say
subjects that you got an F in, then you will get, I think, if you get 2 Fs, so you will have to pay $4 in the next semester in order to classes again. So you have to study those again. You are paying the money, but still you have to study those again, and that can result in you being very tired when you'll be studying 5 subjects from the same semester and 2 from the previous semester. So that's how it's going to happen, right? So yeah, it's very different from India in this sense. And also, like, I have seen people who are not that good in studies in India, they get better when they come here because they learn a lot of things, right? They adjust the environment that they are exposed to in Canada. So yeah, I have seen that. And there are some people who get F and they don't care about the grades and then end up paying a lot. That cases are also there. But still, I would say Canada makes you a skillful person in engineering or in undergraduation or in any sort of studies you are willing to do. If you're not willing to do the study and then you are enrolled in the course, obviously you won't be learning anything, right? You should have a desire to learn things. So yeah, that's what the difference. And even in India, if your college or university is not like teaching you something, then you can learn from outside, right? So if it's all about the willingness to learn. If you have that will, get the knowledge and skills from any place you'd like to get it from. So yeah, Canada is like more practical based, right? Right, exactly. So that's what I meant. You will be doing everything practical and you won't be just learning the theory. They won't care about your essays or long answers. So most of the tests will be multiple choice and liners or just one word. So you have to, right, exactly. So you have to understand it, and you will be doing labs throughout your course. Like I was in computer networking and I had a lab every single semester. So from the very first semester you will start a lab, let's say skill level 1, right? Just assume that the lab I'll be doing in the first semester was skill level 1 hogi. Then second semester mein wohi lab continue hogi, but it will become little more harder. And then next semester और harder, and last में वो big project बन जाएगा, वही same जो हमने शुरू से शुरू किया था. So then we know that we have started this from scratch and take it from there, right? And in the very first, I remember an incident. उन्होंने हमें IoT के बारे में पूछा. IoT, I wasn't even sure what that term meant at that time, like kind of thing, right? So asked us to make IoT object with Raspberry Pi. I'm not sure if you've heard of that or not. So Raspberry Pi is a very small computer. It's just this much. I have it, but I don't know. It's not handy to me right now. So it's this big. You just connect keyboard and mouse, and you can use that with the monitor. So that's the CPU of the whole power. Okay. Like I haven't ever seen that thing, right? So then we made a security camera with that. So within like. So I wasn't even sure like how this works, but then when I was exposed to this environment, I have seen people making video games with that thing, and then wireless printers. So I was like, okay, let's learn something. So that's how you learn it. And if you don't know anything, there are always seniors to help you. So I mean, to shorten it up, I think it's a very different environment in India and in Canada. So Canada is more practical based and India is more theoretical based. So yeah, that's the difference. So वहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट है जैसे इंडिया में जैसे कॉलेजेस में प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं, ये चीज है कि you have to do everything on your own. I have seen people जो कि इतने अच्छे पढ़ने में नहीं है but they got a good placement, and I have seen people जिनको academics बहुत अच्छे हैं but they couldn't find. Why? Because the thing is that networking is the most important thing, not the computer networking but the networking in general, right? Building connections. Exactly, making connections. That's what I meant. And on LinkedIn, I haven't even heard of LinkedIn when I was in India, right? But now I know what is LinkedIn, how you can use it. So LinkedIn is the most powerful tool you have to have when you're in Canada. So let's say you want to get a job, you will connect to people through LinkedIn and then ask them if their company is hiring, and if yes, then you will apply for that. So that's how it's gonna be in Canada. But in India, obviously you have a support, I would say, not for all of them. Not all people get placed through the placements, but still you have a thing in the mind, like if I do better, if I do good in next 6 months, I can get placed. So yeah, that's the thing. But in Canada, you will get internships through colleges and universities. That's called co-op here. So if you have a co-op in the program, not all the programs have co-op, but some of them do. So if you have a co-op in the program, then what will happen is that the college's website will post a lot of jobs when you are in co-op, and then
able to apply through those jobs, and you can get a 4-month paid internship that will help you get a job later on. So yeah, that's the whole thing. Yeah, it will also help in like in resume as well, right? yeah, they do help. They do. So we have like our colleges have a team of professionals who can help you making your LinkedIn profile and making your resume, letting you know how to your LinkedIn. So there are resources, but the thing is they will guide you, not like spoon feed. They won't spoon feed you, right? They will guide you how to do it, and then you are the one who will be doing it at your own. So that's the thing. But आपको काफी ज़्यादा चीजें पता लग जाती हैं. There will be and द टाइम साल में कुछ ना कुछ सेमिनार चल ही रहे होते हैं. आपको ईमेल्स आते रहेंगे कि लिंक्डइन लर्निंग की क्लास है. मतलब आपको अगर आपने सीखना है कि लिंक्डइन कैसे मतलब यूज करना है, यू कैन गो. ऐसी चीज. बट आपको एक चीज है यहाँ सारी नहीं पड़ेगी. So like in Canada आपको काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है. True. Yeah. Because आपने अपनी सबसे बड़ी बात है कि I was so shocked when I came to Canada. To be honest, मतलब everybody do get a little bit of shock. Culture shock भी कह सकते हो आप. So what happens is like we don't used to cook food in India, right? We don't used to work in India. So when we come here, we first study in a totally different environment than we used to. So it takes 3 to 4 adjusted to that environment, and at the same time you are doing a job, and at the same time you are making your own food and doing all the household chores which you are supposed to do, right? So that all things come up, and it becomes a little bit of stressful, I would say. But stress is not a right word, but people get homesick. They're like, oh, why Canada, why I came to Canada, I was so happy. But that's what happens, right? When you are growing, when you're getting out of your comfort zone, that's when shift, right? So you will feel that pressure, and then but at the end of the day, after 6 months, you'll be like, thank God I came to Canada. I am at a place where I can do a lot better here than I was if I was in here. I mean in India. So that's the thing. Okay, so let's talk about your YouTube journey. So कैसा था वो आपके लिए? एक स्टूडेंट से कैसे आप यूट्यूबर बने? So it's like उत्कर्ष, to be honest, मेरा सिर्फ एक ही गोल था उस टाइम पे कि I wanted to learn editing, which I am not doing right now because I have full-time job and everything. I have editors now. The thing is, I was like कि I came to Canada. I have seen people who are like working and then studying and everything, but I was like, let's learn a new skill, because I started reading when I was in 8th or 9th standard. So opened a lot of new things, new perspective in my mind, right? So it's like, okay, काम करने से कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ एक स्किल सीखनी पड़ेगी जो आपको आगे जाके हेल्प कर सके. तो I was like, okay, learn video editing. And how can I learn video editing? By making my own YouTube channel. Okay, what can I do on YouTube? I don't know anything, right? I can't learn teach anything. I don't know anything. So let's share my YouTube journey. So not YouTube but Canada journey. So जैसे मुझे उस टाइम पे आई थिंक इंडियन क्रिएटर्स काफी थे, मतलब 3-4 क्रिएटर्स थे जो कनाडा में वीडियो बना रहे थे, बट मोस्ट ऑफ देम वर, एंड कोई हिंदी का इतना अच्छा क्रिएटर, मतलब कोई मे बी वो आई एम ऑफ दैट, और उस टाइम पे भी मुझे इतना था नहीं. तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू मेक गुड कंटेंट बेस्ड ऑन कनाडा. तो मैंने बनाना शुरू किया, एंड देन 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आई जस्ट गॉट 1000 सब्सक्राइबर्स. And I was not doing it for the sake of money or anything, because I wasn't even aware that I can make money while doing so, right? So I was just creating content, learning new things, spending my time. So I used to go to college from 8 to 3, and then 3 to 11 was my job. Used to be my job, 3 to 11, and I worked in a cafe for 2 years since I was Morton's, right? Right, Morton's, right. Since my college and until the end of the college, I worked at a very famous cafe, Tim Hortons. So I worked as a cashier. I used to make coffees and stuff. So 3 to 11 I used to work in Tim Hortons, and 11 to 2 or 3 I used to edit videos. So, and then 2 to 8 sleep, and then again the same cycle. But I mean I'm not saying कि मैं पूरा हफ्ता काम करता था. It was like 3-4 days जहाँ मैं काम करता था, क्योंकि we can only work 20 hours a week, right? तो ऐसा सीन हुआ, and then continued, and 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया. Then मैंने एक अपने आप को गोल दिया कि I'll post video after every 3 days, no matter what. Okay. So कोविड था, कोविड के टाइम पे मेरे पास टाइम काफी था, कॉलेजेस जो थे वो ऑनलाइन हो गए थे, एंड देन वो चीज ने काफी ज्यादा हेल्प की कि मेरे पास टाइम आ गया, राइट? तो जब वो मेरे पास टाइम थॉट कि I'll do something out of it.
तो मैंने हर 3 वीडियो डाली 6 महीने तक, एंड देन मेरा चैनल जो 2-3 हजार सब्सक्राइबर थे 1.5-2 साल से, वो सीधे 50,000 पे पहुंच गए 6 महीने के अंदर। पीपल लाइक दैट कंटेंट, और जो मैंने पहले कंटेंट बनाया हुआ था उसको काफी ज्यादा एप्रिसिएशन मिली, क्योंकि पहले चैनल को बूस्ट नहीं मिला हुआ था। देन वो चैनल को बूस्ट मिला, देन ऑल द कंटेंट जो कि मैंने बनाया था, और मुझे और मतलब उस चीज से लाइक इंस्पिरेशन मिल गई कि आई विल बी मेकिंग मोर कंटेंट, सो आई कंटिन्यू डूइंग सो, एंड देन एंड देन मतलब उस हिसाब से 100k हुए, देन वी रीच्ड 150k, एंड देन नाउ वी आर एट ऑलमोस्ट 180k, सो या दैट्स हाउ इट्स, या दैट्स आई मीन विशिंग यू द बेस्ट, बहुत जल्दी आपके मिलियन भी होंगे। थैंक यू। राइट, तो ये चीज है कि लाइक यू हैव टू हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव इन योर माइंड इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग मनी और डूइंग समथिंग। सो if you are like if you're thinking of learning new things, then only you will be able to survive in this YouTube game. And if you're planning to make content and help people, then only you can survive. Okay. Right. If you think I'll just make quick money, it's not gonna happen. It took me, I think, 1.5 years to get my first pay from YouTube. That was about $100. Right? That's how it is, you know. Okay. Yeah. So let's talk about part-time jobs. So क्या part-time job काफी easy है कनाडा में मिलना, या it's difficult? What do you think? Utkarsh, took me 4 months to get a part-time job. I was not aware how to find a part-time job. लोगों से सुनते थे कि resume दिया, I used to like hand out 20-25 resumes. किसी का कुछ call नहीं आता था. Then मैंने कुछ चीजें realize की, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है कि how I got a job and 3 mistakes to avoid. तो उसमें मैंने सारी चीजें बताई कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए आपको। और यार एक ये चीज बहुत मैटर करती है कि when you are coming to Canada. I came in January, so January is the like coldest month, not the coldest month but coldest time of the year when you वैसे भी 3 महीने लग गए जॉब ढूंढने में, और मेरे को अप्रैल में जाके जॉब थोड़ी सी टफ होती है मैं बोलूंगा, बट इट डिपेंड्स। अगर आपकी रूममेट्स हैं जो आपको लगवा सकते हैं अच्छी जॉब में, यू आर फाइन विद दैट, राइट? तो आपको उसकी टेंशन नहीं है। तो मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग गया था, 4 महीने लग गए थे, बट मैंने कोशिश की कि मैं ऐसा कंटेंट अपने चैनल पे मैंने पार्ट टाइम जॉब्स के रिलेटेड डाला है, ताकि वो चीज मेरी गलती मतलब वो चीज लोग कंटिन्यू ना करें। बट हाँ, पर ये चीज है कि पार्ट टाइम जॉब अगर आप किसी ऐसी जगह कर रहे हो जो मैकडोनल्ड्स हो गया, टिम हॉर्टन्स हो गया, दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काम करते हैं। किसी को फील्ड जॉब नहीं मिल जाती या ऑफिस जॉब नहीं मिल जाती पार्ट टाइम, क्योंकि कंपनीज डोंट hire you for just 20 hours. They want to hire you for 40 hours full time, but we can't do 40 hours student life, right? So that's why we usually get hired by these places like Tim Hortons, McDonald's, and then all the Subway and stuff. So उधर काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। टिम हॉर्टन्स जो है काफी ज्यादा बड़ी चेन है, तो काफी ज्यादा वो चलता है, राइट? एंड देन यू आर goes throughout your shift, and when you get home you just need a bed to crash. That's how it is, right? So yeah, it can get little bit overwhelming, but I would say yeah, मिल जाती है जॉब अगर अच्छे से मतलब बंदा willing हो तो मिल जाती है, and then obviously you have to do the job in order to survive in Canada. Okay. ठीक है, घर वाले भेजे। So what advice would you like offer to someone who is considering moving to Canada? ओके, तो यार मैं ये चीज की एडवाइस दूंगा कि जो आपके पास इंडिया में टाइम है ना, उसको वेस्ट मत करो। उसको अच्छे से लाइक एनालाइज करो कि आपको पसंद क्या है। अभी से आप अपने कनेक्शंस बनाने शुरू कर दो, ताकि आपको मतलब यहाँ पे आके आपका ऐसा ना हो कि यार आई डोंट नो एनीथिंग। लिंक्डइन के बारे में जानो। लिंक्डइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन योर जर्नी, इन योर कनाडा जर्नी। लिंक्डइन के बारे में जानो, अपनी अपडेट्स करो वहाँ पे, अपने आप को एक्टिव रखो इंस्टाग्राम के बजाय। एंड देन आप यहाँ पे आके यार ओवरवेलमिंग फील करोगे, पहले 6 महीने आपको होम सिकनेस होगी। डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट डू व्हाटएवर यू आर लाइक व्हाटएवर यू वांट टू डू। लेट्स से कि मतलब अगर आपने पढ़ना है पढ़ो, साथ में जॉब करो, साथ में स्किल सीखो। यू हैव टू लर्न स्किल इन ऑर्डर टू यू नो बिल्ड योर माइंडसेट एंड नॉलेज। तो वो चीज है। और तीसरी चीज मैं बोलूंगा, गलत चीजों में मत पड़ो यार। यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, लाइक you can drink, you can do whatever you want to do, but don't just get involved, क्योंकि लाइफ काफी लंबी आगे जाके, यहाँ से आके आपको आगे चीजें काफी मिलेंगी, राइट? You will have। और यहाँ पे यार सबसे बड़ी बात उत्कर्ष, I forgot to tell you कि people when come to Canada, most of the people haven't seen this much money in their lives as a student, right? When we are in 12th, we haven't back in our hand. Many people who haven't even seen like 50,000-60,000, right? But when you come here, you earn 1 lakh if you convert to India, right? But that's not how student converted. But when you come, you usually do. That's how the human nature is, right? Yeah. And you
मैं एक दिन काम किया, मेरे को 6,000 रुपए आ गए, वाह, अगर मैं काम करता रहूंगा तो मैं तो काफी, तो वो चीज है। बट देन खर्च $10 में होते हैं, बट ये चीज है कि व्हेन यू गेट मनी, पीपल स्टार्टेड स्पेंडिंग इट ऑन बुलशिट थिंग्स, ठीक है ना, सॉरी, बट दैट्स हाउ इट हैपेंस। यू विल buy new shoes, $400-500, Nike Jordans and all that stuff. See, you will have your time when you will be able to buy these things in a quick second, right? जब आप work permit पे आ जाओगे, if you get a good job, you will be able to, but just focus on building your habits when you are a student. Don't build expensive habits at the very start, because financial education is the most important thing that will help you in Canadian journey. So that's how it is. So 4 things mentioned. सबसे पहले अपनी स्किल एक साथ में रखो, जो कि आप इंडिया से भी अगर टाइम लगे तो सीख के आओ। सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पे आके आपको होमसिक फील होगा, बट जस्ट गेट योरसेल्फ बिजी विद दैट स्किल, ताकि आपका माइंड सही रहे, क्योंकि कई ज्यादा लोग वापस चले जाते हैं। वेरी मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं है, लाइक क्योंकि देखा जाए तो यू केम बाय योर, सो व्हाई आर यू स्टेपिंग आउट इफ समथिंग यू नो यू गेट सम प्रेशर, सो दैट्स नॉट हाउ वर्क। और तीसरी चीज ये है कि अपनी फाइनेंसेस को रोज की $5 की कॉफी अगर आप पीते हो तो 30 दिन में वो $150 होता है, एंड दैट $150 कुड बी यूज्ड समवेयर एल्स, राइट? सो दैट्स, और जब आप वर्क परमिट पे आओगे तो ये मतलब आप यू विल गेट ऑल द थिंग्स यू वांट, एंड देन जस्ट पेशेंस इज द की। और चौथी चीज ये लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपनी मतलब बना के रखो, एंड यू विल से कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आई वाज नॉट ऑन लिंक्डइन अंटिल द फर्स्ट ईयर ऑफ माय जर्नी इन कनाडा। सो अगर आप अभी से ही उस चीज के जैसे उत्कर्ष आप लिंक्डइन पे हो, राइट, तो आई सॉ योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन एक्चुअली, राइट? सो दैट्स हाउ वी आर, राइट? if you are on LinkedIn you can approach people, because the thing is, let me tell you the straight fact. Instagram 10 साल से लड़के से लेकर 21, 20, 22, 23, 40, 50, 60 जो भी, and everybody is here. The only purpose on Instagram is to help and get that cheap, right? Scroll reels and stuff. But LinkedIn पे वो चीजें आपको नहीं मिलेगी. So only people who are interested in their growth, in their job, in their jobs, and in the mindset, then only you will be able to, right? That's right. So LinkedIn is a professional, the only tool that we have, like the only social media tool that we have to build networks and build like your out of that. So that's why you have to be on LinkedIn. Spend 10 to 15 minutes, just scroll and see how people are posting, so get inspiration from that, and then you will be okay. Now I know कि कैसे मेरे को इस पे पोस्ट, अगर आपने पहला हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा, आपने उधर जाना है, पोस्ट करना है कि टुडे आई रोट माय फर्स्ट कोड एंड हाउ यू फेल्ट. People will start seeing person is starting their journey. And you know what, when you are applying for a software engineering or software coding, I mean like coding job or any development jobs, then you will see okay, the company आपको देखेगी कि he started coding when he was this small, and then he was doing it throughout, right? So then they know okay, just put everything that you learn on LinkedIn, so that people who can follow you can see that thing, I mean see those things, right? So that's what I would say कि ये 4-5 चीजें. और हाँ, 5वीं चीज तो ऑब्वियसली है कि ये मतलब किसी नशे में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है. स्टे हम्बल, स्टे लॉयल और चलते रहो, ठीक है ना? सोबर रहो, सोबर बेस्ट जर्नी रहती है, एंड यू विल एंजॉय इट अ लॉट ओवर द इयर्स. या डेफिनेटली. सो आप व्हील्स एंड फ्रॉक्स के बारे में थोड़ा बताएं, ये आपने नया चैनल स्टार्ट किया है. Sure. तो हाँ, जिसको नहीं पता, मैंने नया चैनल शुरू किया था व्हील्स एंड फोक्स. तो अब सीन ऐसा यार, अगर ट्राई करने की कोशिश की थी ना कि मैं मतलब YouTube पे आऊँ, तो मेरा तो ओनली मोटिव मेरे को था कि मैं ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स बनाऊँ, है ना? मेरे को ट्रैवलिंग का, अब ऑब्वियसली यार इंडिया में इतना ज्यादा ट्रैवल हम करते नहीं थे, इंडिया में YouTube का भी नहीं इतना पता था. तो कह रहा हाँ ठीक है, तो अब मेरा ट्रू इंडियन अक्षित पे मैं ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स में डाल सकता हूँ, क्योंकि YouTube एल्गोरिदम थोड़ी सी ना वो अपने हिसाब से चलती है. स्टूडेंट वाली लाइफ पे डाल रहे हो तो वही डालते रहोगे, तो देन ओनली योर चैनल विल गेट सम रिकॉग्निशन एंड पीपल विल रीच, आई मीन टू योर चैनल, राइट? तो बट अगर मैंने वाले डालने शुरू किए तो वो बंदों तक पहुंच नहीं रहे थे. तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड व्हील्स एंड फोक्स विद माय फ्रेंड तमन्ना. तो हम दोनों अब व्हील फूड एंड ट्रैवल का डालते हैं, ताकि हम फूड एंड मेरे को जो मेरा शौक था, मेरा जो पैशन था कि ट्रैवल का एंड फूड हम दोनों मतलब एक साथ उस चीज पे बिल्ड करें उस चीज को. ऑब्वियसली स्टार्टिंग फेज है कि मेरे पास कुछ टाइम होता है, जिससे कि मैंने कहा कि एक और अच्छा अर्निंग सोर्स हम बना सकते हैं उसको, और अपनी ऐसी चीज पे काम पैसिव में हम एग्जैक्ट.
तो पैसिव इनकम but YouTube जो channels होते हैं that are not that passive, to be honest, क्योंकि you have to work, right. Anyways, but still it's something that you will be like, even if you're getting $100 a month, it's not that bad, right? You are doing something that is making you more skillful, and आपको नई it makes you happy as well, right? So you have a feeling कि you are doing something, right? So वो चीज आपको मतलब में काफी ज्यादा हेल्प होती है. और हाँ, मैंने I just started it and it crossed, I believe, 7,000 subscribers, 6,900. But yeah, एक दोबारा से वो जर्नी देखने को मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि I have seen that journey चैनल, एंड वो वाले चैनल पे तो काफी ज्यादा तेज हो गई थी ना, क्योंकि 5,000 के बाद. बट ये वाले चैनल पे वो जिस हिसाब से मैं चाहता था वैसे चल रही है, एंड देन वी विल बी गेटिंग लाइक मोर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम पीपल कि हाँ हम अच्छा करें. सो या मतलब इट्स अ साइड हॉबी, यू कैन से, दैट आई एम कन्वर्टिंग इन YouTube channel and probably reaching more people. Okay. Best wishes to you. And like एक ऐसी चीज आप बताएं जो आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई है, even not in your YouTube channel. Okay, कोई ऐसी एक secret about True Indian Akshit. Secret about True Indian Akshit. Okay, so the secret about True Indian Akshit is कि even though I have 2 channels, I am doing a job, I still, so there is always a battle in my head that I can do a lot better. So a lot of people see me from outside, right? That he's doing good, earning good, he has 2 channels, he's handling both of the channels, everything and all that stuff. But I know I can do a lot better if I get more productive. So that's the battle you will have with yourself. Don't consider yourself less than anyone else. Everyone has their own journey and everyone has their own story, okay? So अगर आपको लगता है अच्छे नहीं हो, वो इतना अच्छा कर रहा है, उसके दिमाग में भी उस टाइम पे काफी ज्यादा चीजें होंगी, ठीक है ना? तो अभी मुझे पता है कि and one more thing, for all the viewers listening and watching, just stop. Okay, that will change your whole life, to be honest. Utkarsh, if you are not reading, just start reading, and if you are reading, keep it up, क्योंकि reading is the only habit that can give you a different perspective of a lot of things. And if you haven't started reading yet, I will recommend you a book, Rich Dad, Poor Dad. I have read this when I was in 8th. It's Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki, right? I've read that book, right? Now I'm reading Robin Sharma, Everyday Hero Manifesto. Okay, I got it. Okay, Robin Sharma is also a great author. I read, I think, 5 AM Club, and also The Monk Who Sold His Ferrari, and Nobody Cries When You Die. So these 3 books I read from Robin Sharma. But yeah, it's like you have to start reading. That's how. And the thing is, just spend 30 minutes. I only spend 30 minutes a day just to spend on reading. That's it. Those 30 minutes will make you learn a lot of things. And today are podcasts, and there are a lot of podcasts like this one as well. You can learn a lot of things just by listening to people's experiences, right? So, right. Yourself to just Instagram scrolling, just learn things. And I do a lot of scrolling, to be honest, right? And I am facing that battle. That's what I meant, right? Ki I do scrolling as well. I know I can save that time, but the thing is, like, you will realize कि हाँ आपके साथ भी अपनी बैटल है एक जो आपको लड़नी ही है, right? So I make sure कि मैं अपना जितना टाइम वेस्ट करता हूँ उससे अच्छा उस पर प्रोडक्टिविटी पे भी लगाऊँ. तो ये चीज़ है, क्योंकि यार टू बी ऑनेस्ट उत्कर्ष, एक चीज़ अगर मैं बताऊँ तो आई यूज्ड टू वॉच लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड हैक्स, ये वो कौन सी अच्छी वीडियो है. पीपल विल से लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, आप 1 दिन के लिए करोगे, 2 दिन के लिए करोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टिक टू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. सेकेंडली, ऐसा सीन है कि आपको अपना सिस्टम बनाना है, आपको अपने हिसाब से चीजें करनी है, ना कि दूसरों के. वो उनके लिए वर्क करा, 1000 बंदों के लिए वर्क करा, क्या पता. So, अपना सिस्टम रखो जिसमें कि आपके माइंड को खाली ये मत बोलो कि मैं ये करूंगा तो ये सब ठीक हो जाएगा. अपने माइंड को उस हिसाब से करो. एक चीज मैं एक पॉडकास्ट बताना चाहता हूँ. एंड्रयू ह्यूबरमैन एक बंदा है जिसकी पॉडकास्ट है ह्यूबरमैन लैब. ही इज अ न्यूरो साइंटिस्ट, ठीक है. तो न्यूरो साइंस के बारे में वो बात करता है, हाउ योर माइंड एंड ब्रेन वर्क्स. सो यू विल लर्न अ लॉट व्हाइल लिसनिंग टू हिज पॉडकास्ट. 2-2 घंटे की पॉडकास्ट. तो ये मतलब चीजें मैं बताना चाहूंगा. एंड द ओनली थिंग दैट जो सीक्रेट है कि आई बैटल विद माई सेल्फ अ लॉट. ऐसा नहीं है कि I feel very productive throughout the day. I feel like I'm the best. So everybody do, just keep learning. Yeah. Okay. So my last question is, like, what is success in your opinion? What do you think success? How do you define success? Right.
according to me, what success is. So success, according to me, is when you wake up and you have a plan of next 8 hours in your mind that will not only serve you, but that will serve millions of people. That's what success is. And when you come, like when you are done with those 8-9 hours, and after 4-5, you have a sense of feeling that you have done something in order to make humanity or human life better, or lives of human. So that's what success to me. And I don't consider it as money. I like, no money can define what that feeling will feel like once you have. And it's not like you should have a straight goal in your mind. No, I mean, धक्के खा के 4-5 साल चीजें try करो, like just explore, and maybe आपको 40 like you feel like और बस just keep trying. Don't wait कि हाँ भाई आ जाएगी 10 साल बाद में कोई feeling आ जाएगी, अभी मैं chill करता हूँ, नहीं. Just keep learning and keep thinking of, right, exactly. That you started your podcast when you are in 12th, right? So I know कि it will be very difficult when you'll see कि यार views नहीं आ रहे हैं ना, वो नहीं है, but you are learning a lot of. That's what will keep you growing. You'll make connections. You know each other. That's how you'll know a lot of. So you'll make connections out of it. That's how you should do. Just keep learning. Maybe your podcast will become $1 million podcast, right? You never know, right? So that's how it is. So doing what you're doing and then keep learning. Yeah, that's what I mean. And I just got a little bit off track. So success का यही मतलब है कि अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ और मेरे पास एक मोटिव है, 8 घंटे में मैं अपनी कंपनी पे काम कर रहा हूँ या किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पे जो एक किसी बड़े पर्सपेक्टिव पे काम करती है. मैंने किसी बुक में पढ़ा था, हैव योर पर्पस बिगर देन योरसेल्फ. डोंट बी लाइक कि 8 घंटे में इतने पैसे मिल जाएंगे एंड देन आई एम डन विद इट एंड मैं उसको शाम को उड़ाऊंगा. दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंकिंग, टू बी ऑनेस्ट. बस एक बड़ा पर्पस रखो एंड देन आई थिंक कि आपको you will be fine with life. Okay, thank you very much. It's time to end up this podcast. Thank you very much, sir, for your valuable time, and thanks for listening, everyone. If you enjoyed this episode, you would like to help support the podcast, please share it with others, post about it on social media, or leave a rating and review. To catch all the latest from me, you can follow me on Instagram _Utkarsh and also follow Akshit brother on Instagram, and I'll see you next time. Thank you so much, Utkarsh, for having me, and keep learning, guys. That's the only way to live. Okay.